Symbolic interaction and media. Let's see the basic assumptions of symbolic interaction. Symbolic interaction is a framework for building theory that sees society as the product of the everyday interactions of individuals. Society is nothing more than the shared reality that people construct for themselves as they interact with one another. हम जो रियलिटी की बात करते हैं, तो रियलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के बगैर एग्जिस्ट करती है. सिंबॉलिक इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग रियलिटी इज समथिंग विच वी एक्चुअली क्रिएट. हमारे जो डे टू डे एक्सपीरियंसेस हैं और जो हमारा डे टू डे इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो रियलिटी को क्रिएट करता है. अकॉर्डिंग टू द सिंबॉलिक इंटरेक्शन, human beings live in a world of symbols, attaching meaning to virtually everything, from the words on this presentation to the wink of an eye. जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी आप मेरी हर जो है मूवमेंट को देखेंगे कि जो है अल्फाज का यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, या मेरे पोस्चर्स क्या थे. तो ये सारे कोई ना कोई आपको मैसेज कन्वे कर रहे हैं. वी क्रिएट रियलिटी देयर फॉर एज वी डिफाइन आवर सराउंडिंग्स, डिसाइड वट वी थिंक ऑफ अदर्स एंड शेप आवर ओन आइडेंटिटीज़. क्योंकि हम रियलिटी खुद से क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम अपनी सराउंडिंग्स को डिफाइन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम दूसरों के मतलब कैसा सोचते हैं, और अपनी आइडेंटिटीज़ को एज पर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग शेप देते हैं. One of the leading interactionist theorists is Herbert Blummer. According to Herbert Blummer, human beings act toward things on the basis of the meanings that the things have for them. Actions and meanings are therefore self-generated in everyday situation, not in any way determined by structure or of production, as structuralists would generally argue. ब्लमर के मुताबिक ये जो आपके सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, ये रियलिटीज़ को क्रिएट नहीं करते, बल्कि हमारा डे टू डे इंटरेक्शन है वो रियलिटी को जनरेट करता है, और जो हम मीनिंग अटैच करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, वही रियलिटी बनती है. द मीनिंग ऑफ सच थिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम और अराइजेज आउट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन दैट वन हैज़ विद one's fellows. Actions and meanings are self-generated, but only after they emerge in social relations with others. In short, no one lives in an autonomous social vacuum. Meanings are handled in and modified through an interpretative process used by the person in dealing with the things he encounters. This process of interpretation requires that one can generate meanings and also select, check, suspend, regroup, and transform the meanings according to one's actions and situations. Interactionist view of media. Interactionists consider the dynamic relations between producers, text, technologies, and interpretative audience. Interactionists are more interested in how media interact with the structures of our lives. Media are defined as social phenomena that contribute to, rather than psychologically influence or ideological structures, our social environment and consciousness.